All right. Let's go. Good evening, everybody. Welcome to another session with your favorite host, DJ Monks. How you guys doing? Today we are playing this new game called Star Rupture. It is just available for test, and let's check it out. Welcome to Star Rupture playtest. Thank you for playing Star Rupture. You are one of the first players to experience a portion of what the game will have to offer when it released in early access this autumn. If you encounter any issues, blah blah blah. Let's move forward. नया गेम चालू करते हैं. This is not only a single player game, it's a multiplayer game as well. But अभी के लिए सिर्फ single player ही allowed है. Soon they will start off multiplayer as well. जब ये चालू हो जाएगा, then we can play a multiplayer. So let's just check out what this single player has to offer. Let's go. Let's go. Session name is called Life of MOBA. Finishing at least once. Okay. Let's go. Single player. Now no multiplayer is allowed. So let's just start game. Getting into it. Let's go. Graphics looks pretty neat. Pretty new. New तो नहीं है. बहुत सारे ऐसे games हैं जैसे Satisfactory है. And a lot of other games look pretty similar, but from the things that I've seen online, the assets used and the 3D mesh that have been used are pretty neat. What do we go? Biologist, scientist, soldier, engineer. It just automatically started. What the? Okay. Please don't move. I want to run a holistic scan. Yeah, I'm not moving. Commencing But I am holistic moving. scan. Okay. Life vitals normal. Prisoner PO212, welcome to the Argos program. Your adventure with the Playwood Corporation begins right now. Okay. Hello. Playwood I Corporation. am Gal, your galactic assistance liaison. The Playwood Corporation would like to apologize for any inconvenience you may have experienced. Already. You can now exit the lander and begin your introductory training. Okay. Okay. If I scroll, it brings in this thing, and if I scroll back, it doesn't really. Is there buttons? What are the buttons? Building tool is B, F is deconstruct, G is grenade, H is med tool, H is for med tool, M is map, flashlight is T, E is interact, Q is cancel, tab is inventory, fire, change, alternative, crouch, slide, dash. Okay, pretty much. That's a good thing that they put the controls in the front. There's a regenerating chamber. You have claimed a regeneration chamber. I've claimed that. Okay. Personal storage, my own storage. Okay. Inventory looks like this, and this thing, and there is some money here. Survival food pack. Okay. Let's take it all. Gotcha. Gotcha. Okay. I get 2 chambers, or it's the same chamber. Oh, okay. There are 4 chambers allowed, and there is another food here. Take it off. Ah, gotcha. Okay. I think I can increase. No, I can't increase the graphics a little more so that it runs well. Let's try options and video, and let's try getting it a little more resolution. Make it 40%. Hopefully it runs. It's be fine. Yeah, hopefully. Considering we lost, we want to save your changes. Yes. Little better than before. Okay. Mainframe. Welcome, dear convicts. Dear convicts? We are convicts? In hell. Welcome to the first team of the new Argos. Hello, Professor. Yo. What's up? नया गेम आया है, Professor. अगर अच्छा लगा तो खेल सकते हैं. Welcome to the channel, Professor Gaming. Please hit that bell icon and like the stream, Professor Gaming.
Claywood Corporation is honored. Actually तुम्हारे सर्वर डिस्कॉर्ड सर्वर पे आया था बट कोई नहीं दिखा तो फिर मैं ये वाला स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया. But any which way, Claywood Corporation is honored to come to you to the surface of Arcadia 7, located on Rupture system. In the UX galaxy, your presence at the first team, your mission is to extract, process, automate, and ship the resources necessary for Earth. At the same time, we encourage you to explore and document this undiscovered world, a potential new Earth. You were chosen for a reason. Each of you has unique talents and experiences that make you invaluable pioneers. While your past may have been difficult, हाँ मैं बाहर था, आज just आया. Okay. Claywood Corporation offers you the chance to redeem a fresh start. Each completed order brings you closer to freedom. To the freedom you long for. Good luck. All right. That is the main tray. What is this? Basic item printer. अच्छा printer दिया है इन्होंने. Basic material. Basic building material. उसके लिए items चाहिए होंगे. तो ये online है. इसके लिए कोई electricity देना नहीं पड़ता. That's a good thing. हमने ये वाला चेम्बर लिया है, रीजनरेशन चेम्बर. मतलब अगर कुछ डैमेज हो तो शायद रीजनरेशन चेम्बर के लिए काम आएगा. Let's just go outside for this for now. And oh, okay, it shows the distance. Airlock open. All right, let's see. Welcome to Arcadia 7 in is the Arcadia Rupture 7. system. Okay. The goal of this training is to teach you to effectively acquire and produce goods for our clients. However, we'll begin with something simpler. Arcadia is often bombarded by meteorites, which are rich in resources. You have been equipped with a tool to acquire them. Use it to extract what's most valuable in the meteorite. Okay. So, I don't know if it's a survival, Professor. It is, I think, survival जैसे दिखता है. But mostly it's like Satisfactory that I was playing. वेलकम टू अरीना ऑफ वैलर. सेम वॉइस नहीं सेम वॉइस नहीं है, बिल्कुल अलग वॉइस है. बट या आई डोंट नो इफ इट्स अ सर्वाइवल. एकदम नई गेम है. अभी बीटा स्टेज में, मतलब अभी अल्फा टेस्ट चल रहा है एंड फ्री टू प्ले है ऑफ कोर्स, बट ओनली सिंगल प्लेयर है. एंड बेस बिल्डिंग होगा. यू हैव टू लाइक ऑब्वियसली क्रीचर्स है, बट आई डोंट नो वेदर how hostile or how difficult it is. The first time I'm playing it. First time basically anybody's playing it today. It's just been released a few hours ago. And देखते हैं क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है. थोड़ा सा मैंने देखा था इसका एक दो चीज़ें ऑनलाइन और इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि हम सेटिस्फैक्टरी भी खेल रहे थे, तो दैट्स व्हाई सोचा कि ट्राई करते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो आई थिंक व्हाट वी विल डू इज वी विल रिड्यूस द ग्राफिक, नॉट द ब्राइटनेस कैन बी एट 50. We will reduce the 3D resolution to 50% and increase these quality. Yes, उस एम की तरह लग रहा है जो आप पहले खेल रहे थे, उस गेम की तरह. या इट्स समथिंग सिमिलर टू दैट. सैटिस्फैक्टरी दैट अदर गेम इज कॉल्ड. बट देखते हैं. मुझे सैटिस्फैक्टरी की तरह ही लग रहा है, ग्राफिक्स एंड ऑल. यस, इट इज वेरी मच सिमिलर टू सैटिस्फैक्टरी, बट हाँ थोड़ा सा बेटर हो गया है ग्राफिक वाइज. रेजोल्यूशन का थोड़ा सा कमी है, बट इट्स ओके. एटलीस्ट स्ट्रीम पे तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा. Explore the planet and find meteor. Okay, these are meteors. I think this, that and that are meteors. और ये pickable है, नहीं pickable नहीं है. तो let's देखते हैं. ये कुछ लग रहा है. What is it? Wolfram ore. अच्छा. और वुल्फ्राम ओर को हम यहाँ पर क्लिक करूँ तो मिलेगा कुछ? नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलता. तो आई थिंक जैसे इसको क्लिक करूँगा वुल्फ्राम ओर मिलेगा, और क्योंकि वो रेड कलर दिख रहा था बट नहीं है ऐसा. और कहीं से क्लिक कर. ओह, ये क्या है?
हीलियम मिला है भाई, 2 हीलियम मिल गए और 3 हीलियम मिला है। अच्छा, और रीलोड करते हैं इसको। और आई थिंक ये मैंने देखा था, इसको गैदर करते हैं, ये अपने लिए खाना है, ये कुछ खाने के लिए, ये भी कुछ खाने के लिए। हाइड्रो बल्ब एक ही मिलता है, ओके एक ही देते हैं। अच्छा ये है हाइड्रो बल्ब, ये ले लिया। ये क्या है? टाइटेनियम ओर। अच्छा टाइटेनियम ऐसे गिरा हुआ मिलता है, ओके ओके। हाउ वी गेट टाइटेनियम? I don't want to be too far away because you never know what kind of creatures are there here. हम कॉन्विक्ट है by the way. चलो हीलियम ले लेते हैं। और ये क्या है? Can't believe I'm here. Everything here is fascinating. The Yes. Claywood Corporation is very glad to see your enthusiasm. Most convicts do not share it. Most of them are usually idiots who are unable to see the potential in being a pioneer on a new world. Technically, you are not a pioneer. A lot of people have been to Arcadia before you. That was a long time ago, and besides, the quality of their research and observations was embarrassing. You need someone who'll notice the important things, like Darwin on the Galapagos Islands, but better. I'm glad, but I will also remind you of your resource gathering duties. Okay. So even though we are convicts, मतलब हम लोग को पकड़ के एंड प्लेनेट पे फेंक दिया गया है as per what the lady is saying. But I am also a researcher. मतलब मेरे job works, if you can check it out, मेरे को research work दिया गया है and I'm going to be gathering things for the research. Maybe my points schedule, because there are 4 types of people that can play the game. There's a biologist, there is an engineer, there is a researcher, and that is the difference between this game and Satisfactory. इसमें तुम्हें एक selected task दिया जाता है और उस task को complete करना मेरा prerogative है। मैं अकेले मतलब 4 लोग के साथ जब खेलूंगा, oh my god, look at that sun, that is a huge sun bro. Acquired. ये कुछ मिला है, ये क्या है? Oh, per plant. Okay. And let's check out the map. Map नहीं है अभी, तो map नहीं आया है। Map देना चाहिए था वैसे। The way you're explaining is so odd, Monk भाई। न्यू गेम को ऐसे ही explain किया करो। हाँ bro, thanks bro. So I mean, हम लोग रिसर्चर हैं तो हमें रिसर्च करना चाहिए ना। बट अभी सोलो है, बाद में मल्टीप्लेयर हो जाएगा। यस, यू हैव 4 players इन अलाउड इन द गेम। ओ माय गॉड, दिस इज अ न्यू टेरेन ऑल टुगेदर। मतलब ये कुछ नया प्लांट देखने को मिल रहा है। जस्ट गुड बोल रहे हो, कुछ नया प्लांट है। इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा ना मैं सोच रहा हूँ मिनरल्स को। Location barrier activated. What? Letting you out onto the dangerous planet without completing introductory training would be too risky for this investment. अच्छा, Investment? I meant our investment into your safety. The Claywood Corporation Judy. cares about you. ड्यूटी मक्कार, बदतमीज। अच्छा, मैं एट द मोमेंट जब तक ट्रेनिंग खत्म नहीं करूंगा, आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड। So let me just go through the periphery and see where all I can go till the edge. I think I can go down there. So let me just finish the training quickly. Barrier activated. कौन सी barrier पे? You can't go further without completing introductory training first. ठीक है यार, jetpack तो देते। चलो, barrier is activated. नीचे चलते हैं वहाँ पे। Let's go and get more resources because now that she said that, I know I'm safe. और मेरे को दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ेगा और मेरे को जस्ट बेसिक आइटम्स कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। वेरी गुड। द टेरेन बहुत डिफरेंट है, मतलब सेटिस्फैक्टरी से तो कहीं डिफरेंट है ये टेरेन। और जब अपन बिल्ड करना चालू करेंगे ना इस टेरेन के ऊपर, तो अपने को और चीजें देखने को मिलेगा।
like we'll come to know a lot of other things when we start building. So how do the composition on the मतलब terrain management कैसे manage करता है ये गेम, और इसको बनाने में कैसे दिक्कतें होती है, या गेम वालों ने उसको दिक्कतों को कैसे ठीक किया या नहीं ठीक किया हो, सैटिस्फैक्टरी जैसी फील देता है या कुछ और देता है, वो सब अपने को पता चलेगा टाइमली. एट द मोमेंट मैं बस जो हाथ में मिल रहा है, जो सामने मिल रहा है, जो हम लोग उठा सकते हैं उठा रहा हूँ और ले रहा हूँ. होपफुली अपने को कुछ ज़्यादा की बात नहीं है. एक्चुअली मेरे को कोई मीटर नहीं है यहाँ पर दिख रहा जो मुझे ओक्टेन मीटियोर हार्ट बोल रहा है. अच्छा, मीटियोर हार्ट कहाँ है? मेरे को लग रहा है वो है मीटियोर हार्ट. तो वहाँ चलते हैं. रास्ते में पूरा का पूरा खाना उठा लूंगा मैं. खाने की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, खाने की कमी बिल्कुल कभी नहीं होनी चाहिए. खाना बिंदास मिलना चाहिए. सब कुछ वैसे भी फ्री है, फ्री का खाना है, उठाओ उसको कन्वर्ट करके खाएंगे, है ना. बैरियर वहां तक जा रहा है बट वहां नहीं जा पाऊंगा मैं. देखना पड़ेगा. ओ ये कुछ है. ये क्या है? ये वही वाला रॉक है, सड़ा वाला, मतलब वुल्फ्रैम ओर. वुल्फ्रैम ओर पता नहीं किस काम आएगा. फटाफट भागो भाई. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. एक्सप्लोरेशन. डू वी शैल वी चेक आउट इफ वी गेट फॉल डैमेज? फॉल डैमेज होता है? नहीं होता अभी की वो हाइट से तो नहीं हुआ. टेक्निकली फॉल डैमेज गेम के अंदर होना चाहिए. और ये बल्ब है, बल्ब ले लो. बल्ब है, बल्ब ले लो. अच्छा, ये टाइपोलॉजी कुछ क्लेवे है, देखते हैं पानी के अंदर जाने से क्या होता है. एक दो बार मर के भी देखना चाहिए ना कि गेम में. हाँ पता है, बैरियर करती रहती है. बदतमीज कॉन्विक्ट बुलाती है मेरे को. मैंने किसका मर्डर किया? कंट्रोल मतलब डक. ओके. अच्छा, डबल जंप है इसमें. ओ डबल जंप से नहीं हुआ. ओ नाइस 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 नाइस. So terrain is also this thing. Like in Satisfactory, terrain was a big issue navigating through the terrain. And तुमको है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर हायर एलिवेशन पे जाना होता तो तुमको एक रैम्प बनाना पड़ेगा. You will have to make a ramp, and that ramp is basically your so-called your I won't say elevators. What's that called? Your conveyor belts. That's what you had to make as ramps. So yeah, you're gonna make a full wide circle, and if I'm not wrong, look at that mountain of this thing, bro. Oh my god, that's a lot of wolfram. That's a bug that should not happen. मेरा नेट चले जाएगा. I'm back. चले गया था. Okay. That's a lot of wolfram there. Oh my god, that's a lot of wolfram. Woo! That's a big deposit. Wolfram ore. Yes, getting a lot of it.